Good morning, dear students. Open up your book fast. Welcome to the next session of the chapter Fibre to Fabric. Today we will study a little bit more about rearing of silkworms. Now we all have understood what is the meaning of sericulture. Okay, so how this practice has been done. Now look at here. In a silkworm, first of all, silk moths are kept in a separate linen bags. Okay, उनको किसमें रखा जाता है? Separate linen के bags होते हैं, उन्हें silk moth की proper care की जाती है. Each female silk moths lay about 200 to 500 eggs at a time. Okay, now these eggs are provided in a separate hygienic conditions with proper temperature. Now the eggs are warmed to a suitable temperature in an incubator. It is a term. Now underline it, incubator. It is incubator and electrically warmed box, जैसे type of heater होता है आपका, in which a substance can be kept at desired temperature. ठीक है, किस लिए? For larva to hatch from eggs, जिससे larva जो है वो इन eggs में से निकले, जैसे ये वाला सेकंड वाला प्रोसेस है. ठीक है, क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर जब होता है तभी तो चीज़ें ग्रो करती हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. After that, a perforated sheet of paper is placed over the hatching box or a tray and chopped mulberry leaves are spread over it. For what? Mulberry leaves क्यों दी जाती हैं? Because वो silkworm का food होता है. When the larva, silkworms or caterpillar hatch out of the eggs, they feed on mulberry leaves. ठीक है, बता दिया अब तो इसमें भी. So larva, that is क्योंकि जब भी आपका कोई न्यू बॉर्न होता है तो उसको प्रॉपर एनरिचमेंट तो करना होता है ना, नरिशिंग करनी होती है. सो इन द सेम वे मलबेरी लीव्स आर द ऑप्शंस. Now what happens after 25 to 30 days, silkworm stop eating and they move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. अब cocoon बनने का टाइम आ गया है. ठीक है. Now small racks or twigs are provided in the tray. छोटे छोटे sections होते हैं to which cocoons get attached. During the period of spinning its cocoon, a silkworm is transformed into pupa. Now you have understood now. So अब क्या होगा? What happens next? Now अब आपका कोकून रेडी हो गया है. ठीक है, प्यूपा भी बन चुका है उसके अंदर से. अब क्या होगा? Now the journey from cocoon to silk. Now read about it. Now the process of obtaining silk involves the following steps. जैसे आपने वूल का स्टडी किया था, so in the same way there are certain steps. First step is the boiling. Now first of all, the cocoons are first boiled in hot water or treated in ovens to kill the pupa inside. If the pupa are not killed and allowed to grow, they will break the cocoon. This will reduces the length of the silk fiber. तो उस कोकून को बहुत ध्यान से बॉइल्ड वाटर में रखा जाता है so that कि प्यूपा जो है, जो छोटा सा उसके अंदर प्यूपा है, वो किल हो जाए, मर जाए. क्योंकि अगर वो नहीं हो रहा ऐसा, व्हाट विल हैपन? इट विल ब्रेक द कोकून, जिसकी वजह से आपके सिल्क फाइबर्स की जो लेंथ है वो फर्क पड़ता है, वो शॉर्टन हो जाती है. ठीक है. नाउ सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज द रीलिंग. Read about it. The process of taking out threads from the cocoon. Process of taking out threads from the cocoon for use as a silk is called reeling. Okay. अब ये main process है आपका. Now read more about it. Reeling is done in special machines. Reeling is done in special machines that unwind the threads or the fibers of silk from the cocoon. अब उसको attach करना होता है, वहाँ से उसको निकालना भी तो है वहाँ से. The process of taking out threads, क्योंकि हम cocoons, अब कोकून बन चुका है, वो किल भी हो गया उसके अंदर प्यूपा. तो अब जो कोकून के ऊपर जो सिल्क है, जिससे वो सिल्क बना है, we have to take it out. Okay. So now the fibers of the cocoon are too fine and delicate to handle. ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होता है because silk अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है. So many of them are reeled together to yield stronger thread called raw silk. Now the meaning of raw silk is clear to you. जो कोकून से आपने फाइंड आउट किया है, उससे जो फाइन आपने थ्रेड्स निकाले हैं, that is known as raw silk. So the inferior quality silk produced by damaged or waste cocoons is called spun silk.
ठीक है, फिर से वही सॉर्टिंग वाला सिस्टम, जो अच्छा वाला है उसको सेपरेट कर दिया और जो थोड़ा उससे कम है दैट इज कॉल्ड स्पिन सिल्क. ओके, इंफीरियर क्वालिटी मीन्स लिटिल बिट काइंड ऑफ ओके टाइप ऑफ क्वालिटी. ठीक है. नाउ द थर्ड स्टेप इज थ्रोइंग. सो द रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड. तो हमारे नाम की कौन सी है? रॉ सिल्क, बिकॉज ये तो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है. सो द रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क. How? This process is called throwing. This prevents the silk from splitting into individual fibers. तो एक तरह से हमने उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा दी. ट्विस्टेड का मतलब होता है आपने धागे के साथ में धागा मिला दिया. पतले पतले स्ट्रैंड्स आ रहे थे तो आपने उनको ज्वाइन करके एक थिक स्ट्रैंड बना लिया. दैट इज कॉल्ड थ्रोन सिल्क. ओके, रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज डाइन. ऑब्वियसली अब हमें मार्केट में जाना है तो हम तो कलर्ड फैब्रिक्स पहनेंगे. सो व्हाट हैपन्स? डाइंग. So thrown silk is then dyed for making colored fibers. Colored fabric. Fabric means our clothing. So the dyed silk fibers are then spun into silk threads and that are woven into the silk cloth by weavers. तो जो फिर वही है, मार्केट में जब कपड़ा जाता है उसके बाद वो प्रॉपर मशीनरी के थ्रू होके गुजरता है and then the process that gets completed. Now here in your book it has presented a very good chart which explains the complete process. See, first of all female silk moth ने eggs दिए. after that larva बना उसका. फिर larva ने mulberry leaves खा के क्या बना लिया? cocoon. अब cocoon से इससे पहले pupa निकले, then these are transferred into the hot water. then pupa dies and then what happens? reeling silk thread बनता है. फिर उसमें से रॉ सिल्क अलग कर देते हैं. रॉ सिल्क देन कन्वर्टेड इनटू द थ्रॉन सिल्क जिसमें आप ट्विस्टिंग करते हैं. गेटिंग? एंड देन ट्विस्टिंग के बाद क्या होता है? थिक स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, उनकी डाइंग की जाती है और फिर वो वीवर्स के पास भेज दी जाती है. आफ्टर दैट सिल्क क्लॉथ विल बी मैन्युफैक्चर्ड. I hope the whole process is clear to you. This is very important, students. If you do not read it, you will not understand. After watching the video, you have to read it yourself, okay, because it is very important. That's why I have explained you this thing with book. Okay, now the next one is varieties of natural silk. Obviously जब wool की different varieties होती हैं तो in human nature we have developed many of the qualities. So these are the varieties of natural silk. First one is mulberry silk moth. ठीक है, फर्स्ट वन रीड अबाउट इट. मल्बेरी सिल्क मोथ इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ. द बल्क ऑफ द वर्ल्ड सिल्क सप्लाई कम्स फ्रॉम मल्बेरी सिल्क मोथ. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज वेरी सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक. इसी की वजह से कैसा होता है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है. ठीक है. नंबर 2 इज तसार. सिल्क वॉर्म्स मेनली फीड ऑन अर्जुन लीव्स. ओके, दे प्रोड्यूस तसार सिल्क. Next one is, so the next one is airy silkworms feed on castor leaves. ये टाइप का ऑयल होता है. ठीक है, ऑयल निकलता है, मतलब इससे कैस्टर ऑयल होता है. सो airy silkworm feed on castor leaves. they produce bright red colored silk. ठीक है, बहुत ही रेड कलर का प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज कॉल्ड airy silk. Okay, now the next one is mogra silkworm. feeds on som leaves. They produce a lustrous golden yellow mogra silk. They are mainly found in Assam and nowhere else in the world. So another one is also very important. So each type of silk is having its quality. Now students, this chapter, that is fiber to fabric, has been completed. I hope you all have understood this chapter. If there is any doubt, any query, you can ask me. And one important thing, you have to read your chapter again from your book yourself. Thank you for watching. Thank you so much.